Hello students, welcome to Selection IAS. Alright, so we are covering the syllabus of Indian economy for the prelims and mains examination. And today we are continuing with the topic of unemployment that we have been completing for the past 2 days, right? So this is the third session technically. So far we have completed about the unemployment, right? What do you actually mean by unemployment in terms of economy, right? And after this we completed about there are certain types of unemployment. Okay, for example, open unemployment, right? So how do you define the open unemployment? दखली बेरोजगारी, विके याद करने की जरूरत नहीं। ओपन मतलब सामने से दिख रहा है बेरोजगार है, मतलब वो वर्किंग ग्रुप में बिलोंग करता है, श्रम वर्ग में, लेबर फोर्स में वो बिलोंग करता है, बट इज नॉट हैविंग एनी जॉब. ओके, so that's called the open unemployment, right? And with the help of this picture we try to analyze that what's kind of actual problem going on, not just in country but across the globe. Then we understood about the disguised unemployment, in which people are, they seem like they are working but actually their productivity is zero. All right, so it's like there is no impact on any work if they leave that job, right? So looking for a job, this kind of board hoardings you can see everywhere, where people are demanding for the enough number of required employment jobs, right? And this is a very, very beautiful diagram in which we try to explain that what is the actual mismatch going on in the industry. That industries or the business owners, they are saying that we are lacking with the people. Okay, they are saying that we want to give the job, but there are no skilled people. All right, but at the same time people are saying that there is no job in the private sector too, right? There's a huge competition, right? But the industry is saying there is no competition. Okay, so why this is going on? Because there is a mismatch between the skills and the business which is required. People are having low level of skill set, okay, but actually they require the high level of skill set. Okay, for the example, if you're a manager, you should have a leadership skills, right? And if you are having some analysis or maybe some experience in the data analysis or data processing skills, or even if the manager, but if you're lacking the management skills, okay, that's not going to solve the purpose of this organizations. All right, so this is why they are not going to hire you. Okay, so this is the biggest mismatch going on in the industry. All right, so what is the solution? What is the solution? The solution is that you have to, if you want to take the job, so all the colleges, all the institutions, all the schools, they have to work a lot on the analysis of the requirement of the job. That in the current world in 2023, this is the era of industrial revolution 4.0, right? That is AI and internet. Okay, so at this point of time, what kind of skill set is required? For the example, spoken English, that's your communication, basic computer skills, and Microsoft Excel, right? And basics of management skills, basics of leadership skills. Okay, so these are the skills that you are supposed to acquire. Okay, see, if you study in that way, if your college in that way, then you can fulfill the demand of the businesses. Okay, so in that way you are going to acquire the job, and in that way businesses are going to hire you people because you are deserving now, right? So what is the vulnerable unemployment? Most of the people are working in unorganized sector. They are lacking any protection, okay, social security schemes or anything like that. All right, so they are more vulnerable. Okay, if anything happens, they don't have any paperwork. Okay, structural GST or something like that. Cyclical, people are in cycle, right? Sometimes they are becoming rich, sometimes they are becoming poor. Okay, technological, due to technology like robotics, AI. Then with the help of this beautiful diagram, we try to understand the difference between the structural unemployment, fractional unemployment, and cyclical unemployment. Okay, so this will help you to remember the topics for the long run. Now, what do you mean by the educated unemployment? Yes, Mehtab. मतलब ये होता है कि जो हमने एजुकेशन लिए थे, अगर हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कोई जॉब चाहते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं वो एजुकेटेड, और अगर हम वो जॉब, that's under development, no? That's underemployment. What is educated unemployment? एजुकेशन होने के बाद भी हम लोग बेरोजगार हैं। हाँ, एजुकेटेड में क्या है कि एजुकेशन ज्यादा है
लेकिन जो जॉब मिल रही है वो उस एजुकेशन से लो लेवल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कई बार पीयून की वैकेंसी आती है तो आपने न्यूज में देखा होगा कि 200 पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई की है, पीएचडी होल्डर्स हैं, और वो पीयून की जॉब के लिए जिसमें 5th क्लास पास होना मांगते हैं। तो पीएचडी कर रखा है लेकिन 5th क्लास के जॉब में वो जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि वहां पे पैसे कम मिल रहे हैं। ओके, you deserve to earn maybe 1 lakh rupees for a month, okay, but the company or the the people who are hiring you, they are giving you only less than 1 lakh rupees, maybe 50,000, maybe 40,000, maybe anything, that amount which is less than 100K, right? So that's the underemployment. You are getting everything, Jyoti. Then we have this chronic unemployment. What is the chronic unemployment? Tell me. Long term. Very nice. Okay. Like this is going on since the generations. Okay, the forefather, the grandfather, right, the great grandfather, the father, and the current generation, they all are belonging to the poverty, right? Yeah. Then we have the casual unemployment, in which casual laborers are there. Sometimes they are employed, sometimes they don't have the jobs, right? Now let's discuss about reasons for the unemployment. Okay, what are the reasons which are basically responsible for the unemployment in this country, basically, right? And this is applicable to other states as well, other countries as well. This is not just about the case of India. Okay. So the very first one is lack of entrepreneurship that we discussed today only, right? Our whole education system, our whole school system, they only focus on jobs, right? They prepare you for the jobs. But the dilemma is that, even if you are going to study BCom from the university like you, right? What they do? They teach from these books which were written 100 years back. तो बीकॉम की जो पढ़ाई होती है उसकी जो बुक्स हैं, राइट, वो 100 साल पहले लिखे गए थे। गेटिंग इट? तो हाउ दे आर गोइंग टू सर्व द पर्पस ऑफ 2023? So there is a huge lack, right, that we have to understand. Fine. Next we have the inadequate resources or the opportunities. अवसरों का कम होना और संसाधनों का भी कम होना. Okay. There are many factors behind it. For the example, we have illiteracy, right? What is the current literacy rate of this country? 74. It's 74. Very nice. Very nice. Super. And what's the male literacy rate? Male 84. 82, 84. 83 point something? Yes. Okay, near 84. And females? Female 75 या 4 क्या पर? It's 64. Okay. So याद करने का सिंपल तरीका 74 एवरेज है, 10 पीछे महिलाओं का है और 10 आगे पुरुषों का है। ओके, आसान तरीका याद करने का। ओके, yeah. Next, the linguistic ability. For the example, sometimes if you want to work in Japan, maybe in Korea, so you are supposed to know the language of their organization. All right. For the countries like India, you are supposed to know the English language. Okay. Then we have the transportation system. Sometimes they are, calling you to leave your home. Okay. But that's for some family, this is not viable. Okay. Then we have second is lack of skilled employment, right? Skilled people are not there. Okay. What do you mean by skills? Skills किसके कहते हैं? किसे कहते हैं skills? ठीक है, ओके। आप जिस भी डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंटेंसी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो लेटेस्ट डेटा चल रहे हैं, जो एनालिसिस चल रही है, जो नए ऐप्स आ रहे हैं मार्केट में, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, राइट, या सो नाउ बिजनेसेस आर सर्चिंग, जो कंपनियां हैं, दे आर सर्चिंग फॉर द मोर स्पेशलाइज्ड टैलेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई। तो अभी एआई आ गए, रोबोटिक्स आ गए, तो दे वांट पीपल हु नो समथिंग अबाउट एआई। ओके, बट हाउ मेनी ऑफ अस आर रियली नोइंग अबाउट द एआई? None of us, most of the time, right? So AI आ रही है, कंपनियों को यूज करना है, रोबोट्स वगैरह, तो उनको ऐसे लोग चाहिए जो इनको ऑपरेट करना जानते हो, जो इनके साथ सहज हो। ऑल राइट, फाइन। आधे लोग तो अभी इंडिया में रोबोट्स देख करके भाग जाते हैं। ओके, ये कहिए किसी विचित्र ग्रह से आया हुआ कोई उलन खटोला तो नहीं है पी के जैसा कुछ। ठीक है, सो इट एक्चुअली हैपेंस इन दैट वे। फाइन। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रेलेवेंट जॉब। और जिस तरह जॉब्स की भी कमी है, ऐसा नहीं कि केवल लोगों की स्किल्स, लोगों की कमी है, एक्चुअली जॉब्स की भी कमी है। ओके, बिकॉज मशीनें ज्यादा है यहाँ पर, राइट, और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट इज इनएडुकेट एम्प्लॉयबिलिटी, राइट, यानी कि जो जॉब दे रहे हैं वो भी इनफ जॉब नहीं दे पा रहे हैं जितनी की जॉब चाहिए। हमारे पास उतने एंटरप्रेन्योर्स
उतने इंटरप्राइजेस, उतने बिजनेसेस नहीं है कि जो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। ओके, इन टर्म्स ऑफ जॉब। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेजर्स टू कर्ब अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनके थ्रू वी कैन फाइट विद द अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, और देश में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। ऑलराइट, तो मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले आप कुछ अपने सजेशंस दीजिए। या गो अहेड। तो फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम में ये बताना कि स्किल होना चाहिए, उसी टाइम से बच्चों में नए नए स्किल लाना चाहिए, एक पीरियड ही होना चाहिए स्किल के लिए। वेरी नाइस, सुपर्ब, यस। वोकेशनल स्टडी को वोकेशनल स्टडीज वंडरफुल, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इस पे भी that has to be empowered. Okay, good enough, yes. Okay, businesses, entrepreneurship or something like that, and yes, and how, what kind of extracurricular activities? जैसे पेंटिंग, उससे क्या होगा? वेरी नाइस, यू आर मेकिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट उससे क्या होगा? हाँ, क्या रोल है? राइट, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट को, तो इसमें देखो जो सबसे पहले चीज हमें ध्यान देना है वो है रैपिड जीडीपी ग्रोथ। अगर देश में इकोनॉमी बहुत अच्छे से काम करेगी, पैसा बहुत आएगा, तो वो जो पैसा आएगा वो सही जगह पर लगेगा, वोकेशनल चीजों को बनाने में लगेगा, नए कॉलेज नए इंस्टीट्यूशंस बनाने में लगेंगे। ऑलराइट, ओके, स्किल्स दे पाएंगे हम। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज पॉपुलेशन अगर इसी गति से चलती रही तो हम कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे इनके रिसोर्सेज को। फाइन, नेक्स्ट है इंकरेजमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस को सरकार बहुत काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक इंडस्ट्री है यहाँ पे, एमएसएमई इंडस्ट्री। अगर आपने नाम सुना होगा एमएसएमई इंडस्ट्री का, एमएसएमई, माइक्रो स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। ये देश में 11 करोड़ लोगों को जॉब देती है, 11 करोड़ प्लस लोगों को जॉब देती है। और ये सारे छोटे छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग है, समझे। और एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर एमएसएमई सेक्टर ही है इंडिया में। ओके, तो कहने का मतलब ये कि अगर स्मॉल बिजनेसेस को अगर सरकार सपोर्ट करे तो ये संख्या 11 करोड़ से लेकर 25 करोड़ भी जा सकता है, 50 करोड़ भी जा सकता है। ओके, तो इसको सपोर्ट करने की जरूरत है अपने को। नेक्स्ट है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सरकार को समय समय पे चलाते रहने होंगे, स्पेशली विशेष वर्गों के लिए, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बिहार की हालत बहुत खराब है, नॉर्थ ईस्ट की हालत बहुत खराब है, तो द गवर्नमेंट हैज टू फोकस मोर एंड मोर ऑन दैट पार्ट, राइट। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चांसेस। और कुछ ऐसे काम करने होंगे सरकार को जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मदद मिले उनको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो खुद के लिए बिजनेस क्रिएट कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में जा सके, ठीक है। उनके लिए रुकावट बनने के बजाय सरकार को एज अ फैसिलिटेटर बनने का काम करना चाहिए। प्लानिंग फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी एजुकेशन देना है, हेल्थ के लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, सपोर्ट देना पड़ेगा। और राइट, फाइन। नेक्स्ट वी हैव एजुकेशनल रिफॉर्म, जो हम ले आए हैं एनईपी के थ्रू। ओके, बट इसमें भी और बहुत अपडेट करने की जरूरत है, बहुत अपग्रेड करने की जरूरत है, इंटीग्रेशन की जरूरत है हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस को इस नए एनईपी के थ्रू, क्योंकि वो आज भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से पढ़ाए जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, राइट, या सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का क्या मतलब है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कुछ इस तरह की सरकारी एजेंसियां होती है, वो क्या करती है कि सभी जो लेबर है, वर्कफोर्स है, उनका डेटा अपने पास रखती है, और सभी कंपनियां और सभी सरकार की जो स्कीम्स है जहाँ पे लोगों की जरूरत है, लेबर्स की जरूरत है, उनका वैकेंसी अपने पास रखती है। तो जैसे कोई वैकेंसी आई उस तरह के लोगों को वहां भेज देते हैं, जैसे कोई वैकेंसी आई उस तरह के लोगों को भेज दिया। जैसे कि एमपी गवर्नमेंट के अगर आप कोई भी फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के साथ साथ आपको उनका जो एमपी रोजगार पोर्टल है, मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल, वहां पे अलग से आपको रजिस्टर करना पड़ता है, समझे। कभी फिल किया आपने एमपीपीएससी का फॉर्म? राजस्थान में भी सर ऐसे ही है। हाँ, सभी राज्यों में मोरल लेस ही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? कुछ अवसंरचनाएं बनानी पड़ेंगी, ओके, कुछ कॉलेजेस, कुछ इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ कुछ ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स की हम बात करते हैं। हालांकि आपको फर्स्ट क्लास में इसको कुछ जनरल चीजें बताई गई थी, बट स्टिल जस्ट टू रिवाइज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। ओके, so these are the some of the important government schemes. The first one is national rural employment program, okay, मनरेगा जिसे आज हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलेस जो भूमिहीन लोग हैं उनको स्पेशली एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, क्योंकि अगर भूमि ही नहीं होगी
तो वो खेती किस पे करेंगे? तो ऐसे लोगों को पहले जॉब दिया जा सकता है, क्योंकि बाकी लोग तो खेती से कुछ ना कुछ कमाई लेंगे। नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राइट, फूड पर वर्क कार्यक्रम, ओके, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। ऑपरेशन फ्लड आया था इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कर्ब करने के लिए, ठीक है। एंड देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जहां पे राज्य लगातार ओके एक गारंटी दे रहे हैं स्कीम्स की, किसी साल में इतने दिन आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह की चीजों को और सपोर्ट करने की जरूरत है। तो आपको बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए इन्हीं चीजों का ध्यान में रखना था कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, अभी वर्कफोर्स कहाँ कहाँ काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज में कितनी है, अनऑर्गेनाइज में कितनी है, प्राइमरी में कितनी है और सेकेंडरी में कितनी है और टर्सरी में कितनी। और इसके साथ साथ आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कारण है, टाइप्स क्या होती हैं बेरोजगारी के, और इनसे कैसे डील किया जा सकता है, और इसके साथ साथ सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम और कुछ कार्यक्रम कौन कौन से हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।